Breathe out. Breathe out. मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है, मतलब पहले मेरी शोल्डर्स राउंड थे बट अब काफ़ी बेटर लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था। मैम कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर से ही हुई थी। ओके, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं आपको? मेरे शोल्डर थोड़े राउंड हो गए हैं, मुझे वीकनेस भी फील होती है क्योंकि होल डे में ना साइड सिटिंग का ही रहता है मेरा, तो फिर इसलिए मुझे बैक पेन भी होता है। एंड बैक पेन कितने टाइम से है आपको? मुझे ना 2 मंथ्स हो गए हैं एंड डेली मुझे इवनिंग में बैक पेन होने लग जाता है क्योंकि ऑफिस आफ्टर सिटिंग, प्रॉब्लम सिटिंग रहती है आपकी? हाँ, प्रॉब्लम मेरी सिटिंग ही है। 4 to 5 glasses only. You have to go for at least 3 to 4 liters water because पानी की डेफिशिएंसी होने के बाद आपको स्पैज़म बढ़ जाता है मसल्स में। न्यूट्रिशन वगैरह सब प्रॉपर ले रहे हैं? न्यूट्रिशन भी प्रॉपर लेते हैं। दीदी सांस लो अंदर, सांस छोड़िए, रिलैक्स। दीदी ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। You hear the sound? Relax. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Neck को one side turn कीजिए, right side, yes. ऊपर लाना पड़ेगा, ऊपर यहाँ से। Relax. Relax कीजिए, breathe out. Turn this side, and this side. Breathe in, breathe out. Turn this side, face मेरी तरफ कीजिए please. Okay, relax. Your neck, this C1, C2 stiff. Relax. Breathe in, breathe out. Relax. Breathe out. Relax. Breathe in, breathe out. Okay. Relax. Okay. यहाँ फोल्ड हो, हल्का सा बॉडी आगे आएगा. Yes, relax. नेक को आपको रिलैक्स ये रखना सीधा, ये वाला पोजीशन, ठीक है? हैंड्स को दोनों को क्लास्प करना है, ऐसे क्लास्प कीजिए, इसको यहाँ रखिए, इस वाले को सीधा रखिए, पैर को यहाँ लाइए आगे, रिलैक्स, हैंड्स को दोनों को लॉक कीजिए ऐसे, ये लॉक अपने हाथ में आप, नेक को फिर आप ये रखिएगा, ओके? इस छोड़िए, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, that side. Yes. Neck. Yes. Okay. This will come here. Relax. Hand को relax रखिए. Breathe in. Breathe out. Yeah. लाइन ऑफ स्ट्रेट, सीधा लेट जाइए। एज हम देख पा रहे हैं मैम के राइट एंड लेफ्ट फुट में, राइट इज शॉर्टर, राइट थंब शॉर्टर है, लिम्ब की लेंथ कम है राइट की, इसको अलाइन कर लेते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। देख पा रहे हैं दोनों लिम्ब लेंथ इक्वल है। ब्रीथ आउट,
With this hand. Yes, breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Yes. Relax. Breathe in, breathe out. Loose. Breathe in, breathe out. आपका इस तरफ से ये हाई एंड ये लो है, देखिए, ठीक है। दोनों हैंड्स को लॉक कीजिए, रिलैक्स छोड़िए बॉडी को, आप लूज छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए, लूज छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, रिलैक्स, गेट अप, एक बार खड़े उस तरफ फेस करके बैठिए आप, प्लीज, रिलैक्स, यस, बैठिए। अब आपके राउंड शोल्डर्स देख पा रहे हैं, ठीक है, शोल्डर इज राउंड, ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर जो आप ज़्यादा है उसकी वजह से आपका फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ से ये स्पैज़म है, इसको ना लीजिए, हम शोल्डर्स को अलाइन कर लेते हैं, लूज छोड़िए, सामने देखिए, रिलैक्स छोड़िए, सांस लीजिए, छोड़िए, ओके, इसको लगाइए, इस हाथ को पीछे फोल्ड कीजिए, ढीला छोड़िए इसको, हाथ को बिल्कुल रिलैक्स, हाथ को पीछे फोल्ड, सांस लीजिए, छोड़िए, बॉडी टाइट मत कीजिए, रिलैक्स छोड़िए, रियल रिलैक्स, लुक अप, सामने देखिए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टाइट नहीं करना है, आराम से रिलैक्स छोड़ना, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, यस, इसको पीछे लाइए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ओके, ओके, गेट अप, खड़े हुइए, हाथ खोलिए अपने दोनों प्लीज, थंब को होल्ड कीजिए, रिलैक्स, एल्बो को आगे एक तरफ बेंड कीजिए, ओके, सामने देखिए, यस, मैं आपकी बॉडी को पीछे की तरफ लीन कर रहा हूँ, ठीक है, बॉडी को रिलैक्स रखना है, यस, ब्रीद इन, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ओके, दिस इज मोर स्टिफ, इसको ये वाला लीजिए, लॉक कीजिए, दीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, एक बार लेटिए आप, हेड इस तरफ कीजिए, लेग्स इस तरफ कीजिए, हैंड्स को पीछे लाइए, लॉक कीजिए, रिलैक्स छोड़िए, लूज छोड़िए बॉडी को, लुक अप, आपको फिर हाँ ये नेक ऊपर रहेगी आपकी, ऊपर रहेगी, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, काफ़ी बेटर फील हो रहा है, मतलब पहले मेरी शोल्डर्स राउंड थे बट अब काफ़ी बेटर लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था और अभी काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। ओके, आपको डॉक्टर पंकज के लिए किसने रिकमेंड किया मैम? एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था, उन्होंने मुझे बताया कि वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए ही मैंने उनके थ्रू ट्रीटमेंट के लिए मैंने उससे सुना तो मैं आ गई यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। ओके, तो आफ्टर ट्रीटमेंट अभी आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे काफ़ी बेटर फील हो रहा है, मतलब पहले बहुत ज़्यादा पेन था एंड डेली मुझे पेन होता था, बैक पेन, बट काफ़ी बेटर फील हो रहा है। ओके, एंड और आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लिए? यहाँ के मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है एंड काफ़ी रिलैक्स फील हुआ है। एक्चुअली मैं भी सब अपने सारे फ्रेंड्स को रिकमेंड करूँगी जिन्हें भी बैक पेन हो या रिलैक्सेशन के लिए भी वो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।